हाय राइडर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है अपनी मोबाइल डिवाइस। क्या बढ़िया था गुरु। सो वो अपने बाइक के हैंडल के ऊपर जब लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो उसका जो कैमरा सेंसर है और चार्जिंग पॉइंट है या फिर मॉइस्चर आना, ये सारे प्रॉब्लम्स बाइक के हैंडल पे लगाने पे मोबाइल के साथ होते ही होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कोई एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में अगर आपको लेना हो, बट ये एक बेस्ट ऑप्शन दिखा मुझे, विच इज़ एवोसिका C3 Pro। सो दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ 6300। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा विच इज़ MSA। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको। उससे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 6,500 या 6300 में पड़ जाएगा। शिपिंग होगी 13 या 14 दिन में उनकी ही साइड से। सो ये मुझे मिला है एंड आई हैव गॉट दिस इंस्टॉल्ड। इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और ये हैंडल के ऊपर कैसे दिखता है, क्या इसके फीचर्स है, ये आपको सब इस वीडियो में दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर है क्या। इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 2 मिल जाएंगे, दोनों टायर्स के लिए। फिर वायर मिलेगा और ये हैंडल माउंट्स मिलेंगे आपको। ये हैंडल पे लगेगा, इसके बाद बॉल माउंट लगेंगे, उसके ऊपर ये 5 इंच की स्क्रीन लगेगी और वायरिंग बहुत ही सिंपल है। So let's see what are the features we are having here. What is this button? This is the home screen. We have CarPlay and Android Auto. Bluetooth volume. Well, let's check the volume is full. Brightness is okay. You can increase the brightness. Settings, you can see language, key, volume, screensaver, phone audio, SD card. Do we have SD card? No SD card here, but touch is pretty good comparatively. So what I have experienced so far is that I can see that tire pressure system is working fine. 40 is the front PSI, back is 39, so which is okay. We have to reduce a little bit of air behind. So this is a basic screen. I wanted it this way. I wanted it small and close to my eyes so that I don't miss out to see the console in front of me, and I have decluttered everything on the bike handle, where there used to be a charger connected here and a mobile mount. The biggest problem I had was with the mobile mount because it has spoiled my device and the camera setup. So this is a good product at this price. It's hardly costed me about 6,300, and it's good for navigation, and it works on bike routes, so it's not a problem at all. It looks neat. So far so good.